young aspirants, welcome to Sociology classes. I'm your Sociology educator Sujata. I hope you are all doing well and your study will be going amazing as you are. In today our Sociology classes, we have learned that what is culture. Yes, we have learned what is the type of culture, what is the meaning of culture, and what is the approach to study culture in sociology. All that information and knowledge about culture we will learn today. Okay. So let's pick up your pen and notebook and let's start. So first of all, we have to know that what is the meaning of culture. In simple words, if I say that culture is a learned behavior, yes, culture is a learned behavior. Like culture is a learned behavior. What you are learned from your social relationship, what you are learned from your schools, from your neighborhood, from your family, it's all culture. Culture is a shared value, which is are you sharing with your social relationship. Culture is a transmitted, socially transmitted thing. Culture is a socially transmitted. Are you a little bit confused? Okay, now I will tell you a story. You remember the Mowgli? Yes, the Mowgli from the Jungle Book. Mowgli is a human, right? But he was lived in a forest with a wildlife, animals, and basically he behaved like animals. He run like he run, he eats raw food, vegetables, fruits like animals. He wore his clothes uh, which is made of leaves, right? So Mowgli was lived in a forest. That's why he doing all his acts and all his actions like animals because he was always live in the between of among the animals. Okay, सो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप जैसे माहौल में रहते हैं, आप जैसे लोगों के बीच में रहते हैं और उससे आप जो सीखते हैं वही आपका कल्चर बन जाता है। और वही एक चीज जब बड़ी कम्युनिटी करती है, उसको बड़े समुदाय बड़े लेवल पर किया जाता है तो वो क्या होता है, आपका कल्चर कहलाता है। ओके, सो like Mowgli, we all have a environment, okay, and we learn things from our environment. We learn basic values. We learn to say thank you, to say namaste, to say welcome. All things are we learn socially. It is not biologically, it is not genetically. We learn all the things socially. So I hope you understand that line that culture is a learned behavior. Culture is a behavior we learn with, from all our surroundings. Okay, culture is a socially transmitted thing. Okay, and culture is not biologically and genetically. I hope you really basic you have to understand the basic thing of culture. Now I want to tell you that in our in our life that culture have two types. Okay, culture has two types. One is material culture and the other is non-material culture.
Okay, we have two types of culture. One is material and the other is non-material. The all things we can touch, we can feel is a material. And on the other hand, we can't touch, only can feel is a non-material. All things comes from science and technology in our life is a material culture. Like this is board, this is a material culture. This is marker, this is a material culture. But my basic values, my behavior, my good merit, demerits, all are no material culture. I what types what types of behavior I have is non-material culture. But this board, this camera which I recording my video, this pencils, all are material culture. So we have two types of culture. One is material and the other is non-material. All that things we can touch, we can feel is a material culture, and which we cannot touch, we cannot feel is a non-material culture. Okay, this concept is given by William F. Ogburn. William F. Ogburn said that in human life we have two type of culture. One is material and the other is non-material. Now come to the next part of culture, that is what is the characteristics of culture. Okay, what is the characteristic of a culture? So first thing we see that culture is a learned behavior, right? क्या है ये? एक लर्न बिहेवियर है जो हम दूसरों से सीखते हैं और अपनी लाइफ में ये हमारी वे ऑफ लाइफ बन जाता है, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज अ socially transmitted. What is socially transmitted? Okay, it is not biologically, it is not genetically, it is totally socially transmitted. ये आपको समाज से मिलेगा, ये आपको समाज से सिखाया जाएगा. नेक्स्ट वन इज इट इज अ शेयर्ड वैल्यू. ओके, ये शेयर करने वाली, ऐसा नहीं है कि आपका अपना कल्चर है आप अपने पास रख के बैठे, नहीं. इट इज अ शेयर्ड वैल्यू, आपको मिला है आप दूसरों को देंगे. ओके, इट इज अ शेयर वैल्यू. नेक्स्ट इज it has a it has value, norms and norms and moves. किसी भी कल्चर के पास उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, उसके कुछ मोएज होते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, कल्चर में होती है. नेक्स्ट इज इट इज डायनामिक. ये क्या होता है, डायनेमिक होता है. कल्चर कभी भी ऐसा नहीं है कि एक ही कल्चर रहेगा. तो कल्चर क्या है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम. भाई पहले हमारे दादा के जमाने में कुछ और कल्चर था, नाउ हमारे पेरेंट्स के जमाने में कुछ और कल्चर आया, अब हमारे टाइम में कुछ और कल्चर है, आने वाली जनरेशन के टाइम में कुछ और कल्चर होगा. तो ये टाइम टू टाइम जो चीजें हैं वो बदलती रहती है. नेक्स्ट इज इट इज सिंबॉलिक. कल्चर क्या होता है, सिंबॉलिक होता है. इसके कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ पहचान होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सिंबल्स चिन्ह होते हैं, इसके कुछ निशान होते हैं जो उस कल्चर को क्या बनाते हैं, वो कल्चर को एक अलग आइडेंटिटी देते हैं. ठीक है, तो आई होप मीनिंग ऑफ कल्चर क्या है, टाइप्स ऑफ कल्चर क्या है एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर क्या है, आपको समझ में आ गया होगा. आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट में आपसे फिर मिलती हूँ
टाइप्स एलिमेंट्स ऑफ कल्चर के साथ में, टाइप्स ऑफ कल्चर के साथ में, और हम कुछ ऑथर्स की मेजर डेफिनेशन भी देखेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय, गुड लक, लव यू टू ऑल।